Hello guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about how to prepare for MEG4 for this particular papers. सब papers February में और दिसंबर में दिमाग में काफी सारी confusion थी. Now it been clear that the December paper to be postponed till February first week. First week अभी कहा गया है, क्या ये second week होगा? I have no idea, but you guys need to prepare these questions. I must say these questions to crack this particular paper. That is known as to be aspects of language. अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर ये पेपर हमेशा क्या करता है, एक गूगल एग्जाम मतलब एक अलग से पैटर्न लेके आता है, तो इस बार हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना है. सो दे आर द क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. अब हम पेपर में क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, किन चीजों को दिमाग में लेके चलना है. along with that, lots of students those are being saying sir please speak in English only as we don't really have a proper command in Hindi. So guys, please watch on the video till the end as I'm going to use both the languages as per your convenience. So let's start in the class with a basic idea that how we're going to crack this particular paper. For that we need to go through by these topics, such as the topics or the expected questions. Along with this, you guys need to follow my INSTA ID so that you can check out the short questions. Here's the expected short questions for February 2021 MEG4. I'm going to upload there only. Let's start the class. The first thing that we are having in mind is the very expected question, that is the Bloomfield theory of structuralism. The first and the foremost thing that we need to clear in our mind is सर कैसे पढ़ेंगे ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को. तो पहला क्लियर कर दूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार पेपर में आने वाला है, वो यहां लिखा हुआ आपके पास. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. अब हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस, मैं इस क्वेश्चन को कैसे क्लियर करूं. सर आर यू प्रोवाइडिंग द नोट्स, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाते हैं. यस आई डू प्रोवाइड नोट्स एंड नोट्स आर नॉट फ्री. पहले क्लियर करता हूं, बाद में स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने मेंशन नहीं किया. नहीं, मैं मेंशन करता हूं हमेशा दैट नोट्स आर चार्जेबल, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट. अब जब आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स के साथ आपको ये सारे क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर्स मिलते हैं. इनके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो हम वहां से पूरी तरह क्लियर करते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू गेट द डिटेल नोट्स, एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हैं. देन व्हाट अबाउट द वीडियोस, वी आर टॉकिंग अबाउट वीडियोस. तो वीडियोस YouTube पे हैं एंड दैट ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू गाइस कैन फॉलो दैट वीडियोस. फॉर दैट यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल. आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हर वीडियो को एक्सेस कर पाओ. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, दैट इज ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. तो आई होप आपने ये लिख लिया पूरा पूरा. कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगेन, द सोलोलियन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस स्ट्रक्चर. व्हाट डू मीन बाय साइंस स्ट्रक्चर. अभी साइंस स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे और किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, आप इन दो क्वेश्चन की बात करते हैं. मैं दो क्वेश्चन की बात करता हूं, ब्लूमफील्ड और सोलोलियन दोनों थ्योरी हैं. साइंस स्ट्रक्चर क्या है, हाउ द स्टाइल वाज बीन देयर, वो लास्ट क्वेश्चन में डील करेंगे, वो आएगा भी. एंड देन हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है, भागना नहीं है. आई एम नॉट इन हरी एंड आई थिंक यू टू आर नॉट इन हरी. आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. द फर्स्ट टू क्वेश्चन आर द ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. और ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, हाउ द ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर और द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. कम अप टू द नेक्स्ट वन, द सोलोलियन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस सिस्टम. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. I repeat, what are the characteristics of human language and how it is being different from the animal language. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के लिए. यहां पे सिर्फ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल के दे दिया हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल लैंग्वेज, द एनिमल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. तो कैसे डिफरेंट है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को क्लियर करना है, वो सारी की सारी बातें यहां एक्सप्लेन करेंगे. एंड आई रियली बिलीव कि आप इसे फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. Come up to the next page. Question number 4. Distinguish between vowel and consonants. Guys, make sure ये ontology. Yes, I'm saying make sure ये ontology, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में भी मिलेगा कंफर्म. या तो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, नहीं तो आपको शॉर्ट नोट्स में 100% मिलेगा. तो ये क्वेश्चन पेपर में आना है इस बार. So I really want you guys to be perfect with this particular question. The question is distinguish between vowel and consonant. Discuss its consequences in language 1 and language 2.
What is language 1 and language 2? You know the basic meaning of the language 1 and language 2. Yes, we will going to deal with this particular term in a bilingualism and multilingualism and how it is being used in language 1 and language 2. That is the acquisition language और आप पूरे concept को clear कर चुके। तो यहाँ क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। Distinguish between the vowel and consonant. Discuss its consequences in language 1 and language 2. Come up to question number 5. Explain bilingualism and multilingualism. How it is being used in language communication. तो मैंने क्वेश्चन दोबारा से ऐड ऑन कर दिया। मैंने बोला आपको distinguish between bilingualism and multilingualism and how it being used in a literature या मैं बोलूँ in language communication। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। You guys need to be master of it. When you be a master of it, so you're going to deal with these particular questions and then work out all the pros and cons. That is required from your side. And I hope आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। Jump up to the next question, question number 6. Discuss stress. I repeat, discuss stress and rhythm in connected speech. Now look at here. From one question to question number 5. All are being interconnected. सारे के सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। अब मैं अगर एक को समझता हूँ दूसरे को अपने आप क्लियर कर लूंगा। लेयर्स आर बीइंग क्लियर। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन, मैंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जिसमें मैंने एक साथ सीरीज को वर्कआउट किया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन कभी जाए तो you guys are able to do just these questions, not able to see any other, I assure you that you're going to score least to least 60 to 70. So make sure that you guys are going to get all this. Those who are not able to get the answers, find out my notes, work with the notes and the videos. You're going to crack the paper with maximum number marks. Jump up to the next level. That is question number 6. Here we are. Discuss stress and rhythm in a connected speech. Come up to the next question. Define annotation. What is annotation? अभी annotation क्या होती है, इसको कैसे क्लियर करना है, इसको शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Yes, we can expect this in short notes. Then describe the three tone groups. What does mean the three tone groups? So rising, falling, and the one more. मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो उसके लिए annotation की वीडियो डेफिनेटली देख लेना, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। Yes, you will be able to clear the complete concept by seeing that particular video based on annotation. तो आप उसको प्लीज फॉलो कीजिए, डू फॉलो दैट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। एंड इफ यू थिंक इट्स अ वैल्यूएबल वीडियो वर्दी टू वॉच, देन डू शेयर एंड हेल्प मी टू प्रमोट माय चैनल टू। जंप अप टू द क्वेश्चन नंबर 8. What are the tests? I repeat, what are the tests that would help to identify a synthetic constituent? What does mean a synthetic constituent? अभी क्या होते हैं, इनको कैसे क्लियर करेंगे, and how are we a master of these things? सर सिंथेटिक कांस्टेंट पेपर में कंफर्म आता है, इसको क्लियर करना ये आपको शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है। तो दोस्तों को अभी वर्ड अबाउट शॉर्ट नोट्स मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से गो अप करेंगे। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू यू डिस्क्राइब वेरियस क्लॉज एंड सेंटेंस टाइप्स? सो इट मींस क्लॉजेस and its types, sentences and its types, and we guys need to give with example, means the explanation with examples. I repeat the question. How would you describe various clause and sentence types? Come to the next question, question number 10. Explain the need and process. This is the most expected question for the paper. Sorry. Explain the need and process of language standardization. What does it mean by language standardization? Why it is being required? What is the process of language standardization? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार मैं भी इसी पेपर के अंदर। Come up to the next question, question number 11. Explain the factors that have bearing upon second language acquisition. Look at here, the second language acquisition. What does it mean by the second language acquisition? Sir, English is not our language. Really, it's not been our language. We have been from the Hindi origin. Hindi is our first language, L1. But the English we have been really accepted, really. So borrowed from Britishers, those ruled India. अब यहाँ पे मैंने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन. व्हाट इज द लैंग्वेज एक्विजिशन? उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मेंशन करने आप. दैट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, L2. कम अप टू क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज लैंग्वेज वेरिएशन? या दिस इज गुड क्वेश्चन.
कंफर्म आता है, पेपर में रजिस्टर आता है, डायलेक्ट आता है, हम सर कैसे करेंगे इसको, कैसे कॉन्सेप्चुअली क्लियर कराएं। जिसने लैंग्वेज वेरिएशन पढ़ा है he will be able to do each and every part. So what is language variation, why does it occur, what are its types? So सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, हाउ इट वर्क आउट, इसके वेरिएशंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू यूज ऑल दिस। सो यू गाइस नीड टू गो विद अ कंप्लीट कॉन्सेप्चुअली, एक एक चीज को क्लियर करना है। तो यहाँ पे हो गए क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा, ताकि क्वेश्चन जूम करके आप इजीली देख लेंगे। तो यहाँ के क्वेश्चन तो ऑन टिप हो गया आपको। नाउ आई नीड टू मूव दिस साइड सो दैट आई कैन डील विद दीस क्वेश्चंस। Here question number 13, what is style in language? What is style in language? अभी स्टाइल लैंग्वेज में क्या है, इसको क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एनालाइज लिटरेरी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। लिटरेरी टेस्ट क्या होते हैं, मतलब लिटरेरी टेस्ट क्या है, इनको कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए। जब आप क्वेश्चन 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स। लैंग्वेज प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लैंग्वेज प्लानिंग एंड इट्स टाइप्स। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज प्लानिंग एंड इट्स टाइप्स, उसको पूरा क्लियर करना, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। लुक एट हियर द अमेरिकन इंग्लिश। इसमें आप राइज और अमेरिकन इंग्लिश भी क्लियर कर सकते हो, इसमें आप द वे इट वाज बीइंग यूज्ड वो भी उसको क्लियर कर सकते हैं। Come on to the next question. What is morphology? Yes, I was waiting for this particular question. What is morphology? Distinguish between inflectual and derivational morphology. Now, inflectual and derivational morphology. So, types of morphology is clear. Inflectional क्या है, derivational क्या है, उसको कैसे क्लियर करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, वो सब यहाँ है। Come question number 18. What is speech community? I repeat, what is speech community? Why it is difficult to define it? A speech community क्या है? Why it is difficult to define it? उसके सारे cons and cons along with the certain examples. I really want you guys given that particular answer. Come on to the very last question. Explain Indianness. This is the last question. Indianness आ गया ना? So explain Indianness of Indian English. How it is different from British and American English. अभी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश से कैसे रहा है वो सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करना। So guys, you people need to give these answers and make sure that you be the master of these questions. Baki, we know that we're going to lose this paper. All the best.